हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो एज़ यू ऑल नो, ब्लैक फ्राइडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। दैट मीन्स हर एक ब्रांड पे काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स लगने वाली हैं। कुछ ब्रांड्स ने तो ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। सो इन बिटवीन माई वर्क स्केड्यूल एंड माई पर्सनल लाइफ अब शॉपिंग के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शॉप। एक ब्लैक फ्राइडे और एक बॉक्सिंग डे, क्योंकि इससे बेटर डील्स आपको पूरे साल में किसी ब्रांड पे नहीं मिलेंगी। बॉक्सिंग डे तो दिसंबर में है, बट फिलहाल 29 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे है। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट थोड़ी सी शॉपिंग की जाए एंड आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मुझे क्या डील्स मिली हैं, क्या प्राइसेस मिले हैं, मैंने किस किस ब्रांड से फ़िलहाल सामान लिया है एंड किस किस ब्रांड से मैं सामान आगे लेने वाली हूँ। अगर आप लोग भी ब्लैक फ्राइडे पे शॉपिंग करने का सोच रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। मेक श्योर आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। दिस टाइम आई लिटरली स्प्लर्ज्ड। सो अगर आपके विश लिस्ट में भी काफ़ी टाइम से सामान पड़ा हुआ है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शॉप। सो मैं इन स्टोर भी गई थी, वहाँ पर कई स्टोर्स में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता। सो मैंने वहाँ जाके चीज़ें पसंद की, फिर मैं घर पे आई, मैंने दोबारा उसको अच्छे तरीके से ऑनलाइन देखा, जाके प्राइसेस मैच किए। प्राइसेस तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन एंड इन स्टोर सेम ही होते हैं ब्लैक फ्राइडे पे, ऑलमोस्ट, बट मेक श्योर यू चेक देम आउट। सो फिर मैंने घर पे ही ऑर्डर किया एंड फाइनली वो सामान आ चुका है। सो आई एम हियर। सो दीज are the boxes which came in the mail today. Almost गिरने वाला था ये। This is one of my favorites and this is also one of my favorites, but I will save this for last. इसके बाद I ordered something from Sephora as well. उसके बाद I got Vans, something from Adidas, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था एंड ज़रूरी भी था, बट मैं लेज़ी हो रही थी तो मैंने लिया नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स, बाथ एंड बॉडी वर्क्स को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। सो हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पैकेजेस में क्या है। फॉर अनबॉक्सिंग आई हैव टू शो दिस व्यू टू यू गाइज। इतना ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बट इट्स अमेजिंग। नवंबर एंड दिसंबर यहाँ ठंड तो बहुत होती है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज एवरीथिंग लुक्स सो प्रिटी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाथ एंड बॉडी वर्क से। इनके पास हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डील्स लगी होती हैं। जब मैंने ये लिया, इस पे लगा हुआ था बाय 3 एंड गेट 3 फ्री ऑन फुल साइज बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। सो मैंने इस डील का फ़ायदा उठा लिया। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई गॉट इज़ दिस बॉडी वॉश। इट्स कॉल्ड 1000 विशेज़ एंड ओ माई गॉड, इट स्मेल्स डिवाइन। इसमें नोट्स हैं क्रिस्टल पियोनीस के, एम्बर के, एंड इसमें प्रो विटामिन B5 है और एलोवेरा है। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है, नॉट दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, बट मैंने और भी यूज़ किए हुए हैं एंड इट्स अ वेरी नॉन ड्राइंग फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर आके आपकी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो दिस इज़ द परफेक्ट वन अगर आप विंटर्स में यूज़ करना चाहते हैं। सो डू गिव इट अ शॉट। सो द सेकेंड थिंग विच आई गॉट इज़ दिस बॉडी लोशन। इट्स कॉल्ड द प्योर वंडर। लेट मी, yeah, now you can see it. So it's called Pure Wonder and it smells, again, so good. अगर आप भी बॉडी लोशन लेने का सोच रहे हो, you have to give this a shot. It is so good. Oh my god, I cannot wait to try it. अब आप बाथ एंड बॉडी जा रहे हो एंड वहाँ जाके कैंडल ना लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली मी, बिकॉज आई एम obsessed with scented candles and this is one of my favorites. Let me give you a close up. It's called Coffee and Whiskey. This is my second purchase. This is one of the best candles out in the market. If you are a coffee lover, you're gonna love it. So अगर आप भी कैंडल लेने का सोच रहे हैं, इसको ट्राई करना मत भूलें. So next is the last thing which I got, which is a body cream. It's called Strawberry Pound Cake and जैसे इसका नाम है ना, Strawberry Pound Cake, अगर आप इसको लगाओगे ना, you will smell like a cake. आप कहीं भी जाओगे, सब आपको पूछेंगे that what are you wearing? This, how do I describe it? Okay, so it's strawberry cake.
It's a literal strawberry cake. अगर मैं इसको खा सकती होती अभी तक मैं इसको खा चुकी होती. इतना delicious. खुशबू है इसकी. Oh my god, you have to try it. I know मैं हर चीज़ के लिए यही बोल रही हूँ, but trust me, these are one of the best. मैंने वहाँ से almost सब कुछ try किया हुआ है. That is why I am kind of an expert in this. So to give this a shot. So next up is this package from Sephora. Sephora पे भी ऑनलाइन सेल चल रही थी. जो उनके मेंबर्स हैं उनको 10% ऑफ है. जो उनके VIP मेंबर्स हैं उनको 15, एंड जो उनके रूज मेंबर्स हैं उनको आई गेस 20% ऑफ था. सो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी फ़ायदा उठाया जाए. आई हैव बीन वांटिंग अ मस्कारा फ्रॉम सो लॉन्ग, सो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर कर लिया जाए. सो लेट्स ओपन इट टुगेदर. मैं काफ़ी टाइम से इसको वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था आप लोगों के साथ इसको अनबॉक्स करूँगी. So here we go. The thing I hate about this is इसमें से काफ़ी ज़्यादा I don't know dust particles and whatever. I hate this packaging. So yeah, I got this mascara. It's called Size Up. It's from Sephora, obviously. And if you're looking for the best volumizing mascara, you have to give this a shot. This is the best in the market. I have tried mascaras from almost everywhere, from high end to affordable. सब कुछ try करने के बाद this is unbeatable. अगर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, you will never go back to any mascara you are using. It's affordable and it's one of the best. So try it out. अब this is for all the sneaker shoe lovers. अब मैंने recently gym join किया था, so I wanted something comfortable and lightweight. So I thought मैंने पहले Converse यूज़ करके देखे हैं. They are the best for gym purposes. But मैंने सोचा इस बार क्यों ना Vans try किए जाएं. Vans off the wall. Yeah, these are the ones that I got for the gym and they look so perfect for gym, and I hope ये comfortable भी हों क्योंकि I've never tried them before. मैंने as I was telling you कि मैंने Converse try किए हैं, so मैंने सोचा it's time for a change. So here we are. Next चीज़ जो मैंने ली है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से चाहिए थी वो हैं slides. So इसलिए मैं एडिडास गई. वहाँ से आई पिक्ड अप दीज. आई मीन मुझे ना बिल्कुल फ्लैट स्लाइड्स या स्लिपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स पसंद नहीं है. मुझे थोड़ी सी प्लेटफॉर्म हील पसंद है. आप लोग सोच रहे होगे घर पे भी प्लेटफॉर्म हील की क्या ज़रूरत है, बट it's a personal preference. I prefer a little bit of platform heel to my slides and flip flops. So that is why I selected these. Look at them. It's so soft and it has a platform which I love, and most important thing for me is इसका जो ये band है, it has a cushion comfort here. So काम करने के बाद जब आप घर पे आते हो तो कभी कभी आपके पैर स्वेल हो जाते हैं. So इसीलिए ये comfort level जो है वो मुझे चाहिए था अपने घर पहनने वाली slides में. So that is why I selected this. And yeah, now you are not ready for the next package which I got. Oh my god, I cannot wait to open it. ये काफ़ी दिन पहले का रिसीव कर लिया हुआ है मैंने, बट आई वॉज वेटिंग कि सारा सामान आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स करूँ. सो लेट्स डू इट. ओके, I always get super excited. Okay, I won't say anything. You have to guess the brand first. और अगर आप लोगों ने guess कर लिया है, so अभी के अभी जाके कमेंट में लिखो. Oh my god, oh my god, oh my god. Yes, अगर आपने guess कर लिया है, so you guessed it right. It's from YSL. I've been wanting this for so long now. I mean, I have the original version of it, but ये है warm florals में, so I thought, why not give it a shot? So yeah, these are the YSL papers, and oh my god, yes, it is the YSL Libre. एंड आई हैव बीन वांटिंग दिस. जैसे कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा टाइम से मेरे विश लिस्ट में पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास ओरिजिनल तो है ही. सो बट जब मैं इन स्टोर गई एंड व्हेन आई स्निफ्ड इट आई फेल इन लव. सो इसलिए मुझे ये लेना ही पड़ना था. बट लेट्स सी हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. टिडिंग.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी पैकेजिंग की वजह से इसको लिया है. आई मीन इट इज़ सो लग्जरी, इट इज़ सो गुड. ओह माय गॉड. सो अगर मुझे इसकी खुशबू को डिस्क्राइब करना हो, आप कहीं पर भी जाओगे ना, अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ते हुए जाओगे, एंड जो भी आपके पीछे से जाएगा या फिर जो भी आपके साइड से निकलेगा, they'll be like, what is she wearing और what are you wearing? Oh my god. जो मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन है वो काफ़ी बारी वेयर किया हुआ है, एंड मुझे हर बार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हर बार लोग आके मुझे पूछते हैं कि मैंने क्या वेयर किया हुआ है. बट now it's time for a change. So yes, oh my god, I love it. It's so pretty. Yes. So I've added this to my collection. Oh my god. And sirf yehi nahi, I ordered something else as well. Let me show it to you guys. Next up we have, it's a YSL makeup pouch. I mean, it's a pouch, but you can use it for literally anything. I'm gonna use it for my makeup. So it has the YSL logo here. Black goes with everything. Black is love. And I love black. Okay. अब इसके अंदर क्या क्या है? Let me show that to you. सबसे पहले we have, I mean, I got everything in a mini size. So the first thing we have, oops, I dropped something. Thank God, कुछ टूटा नहीं. So yeah, the first thing I got is this YSL Love Shine. I mean, it has been going viral for a while now. So मैंने सोचा मुझे भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये इतना क्यूट है. I got the mini one because it's very good for travel. या फिर अगर आप छोटी सी आप कहीं भी अपने पर्स में डाल लो, so it's nice. Isn't this the cutest thing ever? Oh my god, it has the classic YSL logo on it. And the shade, it's universally flattering. It will work on all the Indian skin tones. So, oh my god. Cute, perfect, love it. Next thing we have is the YSL Lash Clash Mascara. I know मैंने आपको Sephora वाला mascara दिखाया, but I just want to try this as well क्योंकि why not? You never know. So इसका भी मैंने mini size ही मंगवाया है. And yeah, the packaging is so chic, so perfect. And इसका जो wand है, oh, it has a big wand. And इसका wand और Sephora वाले mascara का जो wand है वो exactly same है. So it is also the volumizing mascara. I cannot wait to try all this. And अगर आप इसका review देखना चाहते हैं, so do follow me on my Instagram. अभी जाके करो. Next thing which I got is this YSL Eau Rouge Serum. It's also in the mini version. And इसकी packaging is gold and black. And trust me, जो भी YSL के products हैं ना, इन सब की खुशबू इतनी rich है, इतनी elegant है और इतनी ज़्यादा classy है. I mean, अगर आप कुछ भी ले लोगे ना, you'll think this is the best purchase ever. I'm feeling that way. So the next thing which I got is this Black Opium Shimmering Moisture Fluid for the body. And trust me, it smells exactly like the Black Opium perfume. अगर आप लोगों ने नहीं try किया, क्या कर रहे हो आप लोग, you have to try it. So मैंने एक hack काफ़ी टाइम से सुना भी है, and शायद आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम परफ्यूम के नीचे या कोई बॉडी मॉइस्चराइज़र लगाएं या वैसलीन लगाएं तो वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करती है. सो मैंने सोचा क्यों ना अगर परफ्यूम को उसी के साथ का जो बॉडी फ्लूइड है उसके साथ अगर पेयर किया जाए, सो व्हाट विल हैपन. सो मैंने ट्राई किया ये, एंड आप लोग भी ट्राई करना. गेट द सेम फ्रेग्रेंस एज योर परफ्यूम बॉडी लोशन में. पहले आप लोशन लगाएं एंड उसके ऊपर आप अगर परफ्यूम स्प्रे करेंगे, यू विल लीव अ ब्यूटिफुल ट्रेल बिहाइंड यू. नाउ इट्स टाइम फॉर दिस बिग सरप्राइज.
इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रही थी और इसी ने ही सबसे ज़्यादा टाइम लिया शिप होने में. आई थिंक इट टुक 15 days almost to get this delivered to my house, but finally ये मेरे पास आ चुका है and let's unbox it together. So finally it's time to unbox the big surprise. मैंने already इसकी टेप्स वगैरह खोल ली हुई हैं and here we go. Oh my god, I got something from Coach and I know आप लोगों ने already guess कर लिया होगा कि इसमें क्या होगा, but let me show it to you. Oh my god, look at this beauty. So yes, oh my god, I'm so happy. I mean ये मेरे wish list में, मेरे Pinterest board में काफ़ी ज़्यादा टाइम से था and I wanted to get it. I got it. So it's time to open it. And here we are. This is the Coach Tabby 26. Isn't this so pretty? So here is she. It comes with two straps. One is the shorter one and one is the longer one if you want to wear it as like a side bag or something. So let's put her together and see how she looks. Here she is, already all set, and I can wear it as my shoulder bag. Perfect. And then there are like a million ways to style it. The color is perfect, it's neutral, it goes with everything. It has the signature Coach logo, the buckle, the detailing. Everything is in the details. It's perfect. It has this Coach little charm, a side pocket, and if you open it, it has a pocket in the front, 2, 3, a zipper, and yeah, she is perfect and I love it. Let me know what you guys think. I know आप लोगों को भी पसंद आया ही होगा, all the girls out there. I know you love it. So yeah, these were all the things that I got before Black Friday. And अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई specific brand check out करूँ या फिर कोई specific जगह check out करूँ, so do let me know in the comment section. अभी Black Friday is still I think 2 weeks from today, so शायद मैं और कुछ भी परचेज करूँ. I think मैं definitely करने वाली हूँ. So make sure कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जानने के लिए कि मैंने और क्या क्या शॉपिंग की एंड और क्या क्या Black Friday डील्स चल रही हैं इस टाइम अलग अलग ब्रांड्स पे. So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इसी तरह की और एंटरटेनिंग वीडियोज़ के साथ मैं आगे आपको मिलती रहूँगी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.